काले थैले के अंदर रखा गया था, एक प्राइमर भी था, उसमें बॉल बेयरिंग्स भी पाए गए हैं, बैटरी लगाई गई थी साथ में, और ये हामिद मीर साहब की गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था, बिल्कुल उसी सीट के नीचे जहां पर हामिद मीर साहब सफर करते हैं अपनी गाड़ी में। वो अपने घर से कुछ जरूरी काम के लिए बाहर निकले थे और वहां पर जब गाड़ी रुकी जहां पर वो उस काम के लिए गए थे, वहीं पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये नस्ब किया गया। जब वापस उनकी गाड़ी घर पर पहुंची तो वहां मौजूद कुछ ड्राइवर्स ने, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बात को कहा कि वहां पर उनकी गाड़ी के नीचे एक थैला नस्ब किया गया है, कुछ बारूदी मवाद नस्ब किया गया है, जिसे बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एक बार फिर राना जवाद साहब। आईजी से इस्लामाबाद बेनियामीन साहब से भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा तो बना दिया है, मजीद इस सवाल से क्या पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस मिली, जो धमाकेदार मवाद मिला, जो कि बुनियादी तौर पे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तरह टिन के डब्बे में पैक था, उसको उन्होंने खोल के डेटोनेटर अलग कर दिया, बैटरी अलग कर दी है, एक्सप्लोसिव उसके साथ जो प्राइमर जो उसका लगा हुआ था उसको अलग कर दिया है, और जो मटेरियल था, जो धमाकेदार मवाद था, उसको उन्होंने अब सेव कर रहे हैं, वहां से फिंगर प्रिंटिंग करेंगे और साइड पे ले जाके उसका पूरा डेटोनेटर खोल के वो देख रहे हैं कि इसकी डिवाइस की मैकेनिज्म जो थी उस किस तरह इसको क्लियर करना था। जो इंस्पेक्टर रियाज है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के, उन्होंने अब डिक्लेयर किया है कि ये सेफ है, इसको हमने कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर दिया है, इसको डिस्पोज कर दिया और इसके अब अलग अलग सिस्टम सारे जो है इसके कर दिए। और अभी इस वक्त पुलिस जो है वो मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही है, और जो ड्राइवर सामने वाले घर का था जिसकी मेहरबानी करना चाहिए, जिसकी वजह से ये पॉइंट आउट हो सका, उसका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा जो बाकी लोग यहाँ पे मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके साथ भी पुलिस ने बातचीत की है, और लगता यही है कि ये डिवाइस जो है ये उस वक्त लगाई गई है हामिद मीर साहब की गाड़ी में जब ये बाहर F7 मार्केट की तरफ गए हैं। उस दौरान जहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी है 10-15 मिनट के लिए, ड्राइवर उस वक्त गाड़ी में नहीं था, वो रजिस्टर लेने गया था, हामिद मीर साहब भी किसी दुकान में थे, वहां पे ये लगा। और ये थ्रू आउट जो है ये रास्ते में तकरीबन ये 8 किलोमीटर का रास्ता बनता है इनके घर का, और जहाँ पे अभी लगाया गया है। ठीक है। तो जब ये पहुंची है घर में तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बैटरी के साथ तार थी वो डीएक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से जो भी इनका प्लान था वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जो एक्सप्लोसिव की मिकदार है वो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के इंस्पेक्टर बता रहे थे कि इतनी है कि अगर एक घर में लगाई जाए तो घर को तबाह कर सकती है। तो काफी ज्यादा संगीन और संजीदा किस्म की ये अटेम्प्ट थी, लेकिन वो पॉइंटेशन होने की वजह से टाइमली ये नाकाम हुई है। और उसके अलावा जो उस डेटोनेटर की जो बैटरी के साथ तार की अटैचमेंट थी वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये इसको डेटोनेट नहीं किया जा सका। अच्छा राना साहब, आपने इस तरह के काफी वाकयात कवर किए होंगे जो बम धमाके हुए, सीनियर सहाफी, आपकी आंखों के सामने से ऐसे बहुत सारे वाकयात गुजरे होंगे। आपको क्या लगता है अब तक ये जो तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है, एक जगह पर गए हैं हामिद मीर साहब अपना काम करवाने के लिए और थोड़ा ही वक्त लगा है वहां पर, और उनका ये भी कहना था कि मेरा ड्राइवर जो है वो 5 मिनट के लिए वहां से कुछ दूर गया है, क्या इतनी देर में बाकायदगी से गाड़ी के नीचे लोगों की आंखों से बचकर इस चीज को नस्ब कर देना, कोई ना देखे और उसके बाद ड्राइवर को भी ये पता चले, ऐसा मुमकिन है कि इतनी जल्दी ये काम किया जा सके? अगर तो ये किसी बहुत ही ऑर्गेनाइज और एक्सपर्ट ग्रुप ने किया है जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाने में माहिर है। जो आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस बनती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो जिस शख्स ने बनाया उसने पूरी प्रेपरेशन के साथ बनाया। इससे लगता ये है कि वो शख्स हामिद मीर साहब का गाड़ी को फॉलो कर रहा था, पीछे था वो, और वहां पे जब उसने मौका देखा है और वो देख के मौका उसने जो है वो जल्दी से उसने बगैर किसी तार के नीचे गाड़ी के साथ उसने फिक्स किया है, बांध दिया उस थैले को। और उसके बाद ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह का हो सके। 10-15 मिनट के लिए अगर गाड़ी अनअटेंडेड है तो ये हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पे ये गए हैं वहां पे वैसे गाड़ियों की तादाद तो काफी होती है, लेकिन ज्यादातर वहां पे पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं। लोग दफ्तरों में काम के लिए गए होते हैं, कोई दुकान में गया होता है, कोई शॉपिंग के लिए गया होता है, तो बाहर आपको ज्यादा रश नहीं नजर आता। Well, let me go across to Hamza Ahmed now, who joins us on the phone line. Hamza, what exactly has happened? We understand that Hamid Mir has been targeted and that explosives were found in his car. What can you tell us? Is he safe at this point in time? Where is Hamid Mir right now? Well, yes, I see in the morning when Hamid Mir had his car parked outside his house,
there were explosives found by his driver in his car. And immediately the car was rushed off the bomb disposal squad, and they actually were able to get the explosives out of the car. Hamid Mir is perfectly fine right now, and an inquiry has been set into to find out what were the factors behind anyone who would actually be able to access a very secure area of Islamabad and was able to actually carry explosives and put it in his car, because his car normally is parked inside the house, so it is probable that his car was outside for a very short time, and there were people who were monitoring his activity as well. But right now, Hamid Mir is perfectly fine, and they have an inquiry that is going to be carried out by investigation forces. Right, Hamza, this is not the first time that journalists have been targeted in Pakistan. Who do they believe was behind this attempted attack on Hamid? See, recently there have been attacks on Shiite processions across Pakistan, and Hamid Mir actually is host to a very important news show, a talk show that he does every day. And recently he has been talking on those parts that the Syrians are active and they are operating very actively, successfully targeting Shiite processions. I think this is a reaction that has come out of that as well, because the Taliban militants have already threatened to attack all the people who will actually be supportive of Shiite processions, and at the same time who will actually be highlighting a negative propaganda as to what they call against them. And Hamid Mir is by far a very prominent figure in Pakistan as well, and it was something that was done by him as far as the talk show is concerned. It is relevant that the militants would be able to target, because see, in Pakistan, the security for journalists is something that has been in question. And right now, being in capital, especially Islamabad being considered to be the most secure area of the country, Syrians being managing to actually access to the house of a journalist and managing to put explosives in his car, they would have been able to do much more, because that was his house. So I think this is a very wake-up call for the journalist community. At the same time, it is a wake-up call for the security forces as well, that they need to ensure security for high-profile journalists who are actually working towards promoting what's going on. Right. Hamza, last year we reported the tragic story of Salim Shehzad, who you were also, I believe, related to, who was abducted and then killed. Is there an increasing trend of journalists and media persons being targeted by terrorist outfits? Well, yes, see, Sayyid Salim Shehzad was my brother-in-law, so I was part of what was going on. Yes, see, there have been journalists who have been targeted. Rather than Salim Shehzad, even after his death, there were many people who were targeted and killed. So journalists have been criticized for not actually, meeting the terms as far as Taliban are concerned. They have blamed people like Hamid Mir himself and other high-profile channels active in Pakistan for promoting negative propaganda against them and against what they believe is a jihad that they call. And that is why they have said that they will continue to target these people, and that insecurity as far as journalism is concerned has been always on a high in Pakistan. Hamid Mir is one of the chains of that. Salim Shehzad was an unfortunate one who actually got hold of by the same miscreants. And I think this time around there needs to be a higher voice raised up, so that the journalists who are actively working on freedom of speech should be able to practice what they actually are taught to do, though. Right, Hamza, do stay on with us. Let's cut across to Geo TV, where Hamid Mir in fact works, and listen in to what their latest report is. रहेंगे हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जियो न्यूज के, और हमें इस पूरे वाकये के हवाले से तफसीली तौर पर डिटेल में आगाह कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सदर PFUJ परवेज शौकत साहब ने। परवेज साहब, इस मुल्क में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन इस बार इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और हामिद मीर साहब को उनकी गाड़ी के नीचे ये धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया है। कैसा देखते हैं इसे आप? देखें जी, ये वाकया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए काम है। और साफियों के लिए आपको इल्म है कि पहले ये खतरनाक मुल्क करार दिया गया, जो साफी सच कहते हैं उनके लिए बहुत ही सूरत हाल खराब है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसका सद्देबाब करना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं इस वाक़े की पूरी छानबीन होनी चाहिए, और जो लोग मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये इस दौरान
मुहर्रम का महीना था और इस दौरान ये ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान में साथियों को कत्ल किया जा रहा है और अब इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां इंतहाई सख्त हिफाजती इकदाम किए गए, इसके बावजूद धमाका खेज मवाद का मिलना बहुत ही अफसोसनाक और हमारे लिए बाइस तशवीश है। ये इस पे पूरा एहतजाज करेगी। परवेश शौकत साहब, इससे पहले भी जो अफसोसनाक वाकये पेश आए, जैसा आपने अभी कहा भी कि सहाफत के हवाले से इस मुल्क को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सहाफियों को इंसाफ नहीं मिलता। इससे पहले जो हमले हुए हैं, कोई खातिर ख्वाह तहकीकात सामने नहीं आई है। इस वाकये की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें सामने लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज किया कि इसकी बड़ी हाई लेवल पे तहकीकात होनी चाहिए और जो भी लोग मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी अमली इकदाम नजर आनी चाहिए। मैं समझता हूँ जितने सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से मुहर्रम के हवाले से, तो इस दौरान ये मवाद का मिलना बड़ा नाकाबिले फहम वाकया है। बहुत शुक्रिया परवेश शौकत साहब, सदर PFUJ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस अफसोसनाक वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना है कि इस वाकये में जो भी अफराद मुलव्विस हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त आप जो मनाजिर देख सकते हैं, ये मनाजिर है उस वक्त के जब बताया गया कि इस गाड़ी के नीचे एक थैला नस्ब किया गया है, बारूदी मवाद नस्ब किया गया है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां पर पहुंच गए हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार वहां पर पहुंच गए हैं, बम को नाकारा बना गया है। देख सकते हैं 33 नंबर डेटोनेटर कहा जाता है, इसे खतरनाक करार दिया जाता है। इसे वो टिन में नस्ब किया गया था। इसके अलावा प्राइमर, बॉल बेयरिंग, एक बैटरी साथ थी। उस बैटरी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें जो तारें लगी हुई थी उसमें से एक तार उससे डिटैच हो गई थी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया होते होते बचा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो बारूदी मवाद है इसे यहां पर रखा गया है और सिक्योरिटी एहलकार, बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार यहां पर मौजूद हैं और उसका पूरी तौर पर मुआयना किया जा रहा है। ये डेटोनेटर इसमें नस्ब किया गया था, इसके हवाले से वहां पर मौजूद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार है और जो पुलिस एहलकार मौजूद है, राना जवाद साहब ने हमें ये बताया कि इन अफराद का कहना है कि अगर ये बारूदी मवाद एक घर में नस्ब किया जाए तो उस घर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। इतना खतरनाक और इस कदर इसकी नौयत शदीद थी जो हामिद मीर साहब की गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था। बिल्कुल गाड़ी में उस जगह पर, उस सीट के नीचे गाड़ी के बाहर जहां हामिद मीर साहब बैठते हैं, जब वो घर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सामने वाले घर के एक ड्राइवर ने इस बात की निशानदेही की कि उनकी गाड़ी के नीचे एक काले रंग का थैला मौजूद है। ये आप इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं जब पुलिस को फौरी तौर पर, बम डिस्पोजल स्क्वाड को फौरी तौर पर तलब किया गया और यहां पर आके इसे नाकारा बनाया गया है मुकम्मल तौर पर। तो इसमें मालूम हुआ है कि एक 33 नंबर डेटोनेटर। Well, let me go back to Hamza, who is still with us for more on this. Hamza, we understand that there are bomb disposal squads in the area. In fact, we're getting visuals from Geo TV showing us these officials who have surrounded Hamza Mir's car. What can you tell us as to what they really found, what was happening back there, and what's the situation right now? See, they found baggage which was basically filled with explosions, as they were saying on TV, on Geo Network, that it was enough to actually blow up the whole house. So this was something that was there. At the same time, there were ball bearings in the baggage, which basically are part of all the explosive material which are there. Bomb disposal squad is in the area right now, and the area basically is sector F8 of Islamabad. Now, F8 sector is basically not only a residence to where people like Hamid Mir and high-profile journalists. It is also a place where embassies are located, where other high-profile ministries of the government are also resident in as well. So, this is a very high-secure area, and unfortunately enough that if the assailants were able to get exposure in that area with no checks whatsoever, then it is basically a very big question mark on security beat that actually occurred. And I think this one, because it was planted in a car, it was basically a wake-up call or message of threat to Mr. Hamid Mir for stopping and not going ahead with all the criticism that he has at times for the assailants. And at the same time, now it should be remembered that Islamabad is basically surrounded by areas like Peshawar, like Khyber Pakhtunkhwa and Multan, where there is very strong presence of the Taliban militants. So I think it is a very easy access for them to access Islamabad. At the same time, going through the security the measures as far as reaching these areas is concerned is something that needs to be questioned. At the same time, Parvez Shaukat, who is basically president of Pakistan Federal Union of Journalists, has strongly protested, and the journalist community is also going to be protesting in the same regard.
Right, Hamza, who is believed to be behind this attempt to murder Hamid Mir? In the case of Salim Shehzad, we do know that he was rather critical of the ISI as well. In fact, he had written extensively on the various terror links that were closely associated with the ISI. Hamid Mir has also been rather critical of the establishment of the Pakistan intelligence community. Who is believed to be behind this attempt? Well, see, in case of Salim Shehzad, he was basically an expert on war on terror. So they were very, finger pointing that was done as far as his murder was concerned, and people were critical of the fact that, the Pakistani security forces might also be part of being involved in his murder. But as far as Hamid Mir is concerned, see, he's a TV, television guy, and he's also well known as far as his articles are concerned. I don't think, he has ever had strong criticism against the Pakistani security forces. But still, he has mentioned many a times in his shows about the increased attacks of the militants in various areas. He has also been to areas like Quetta as far as target killing is concerned, and he has actually addressed those issues being on ground in that position. So I think that is basically what the factor might be behind it, because Taliban militants right now have not claimed the responsibility of the attack, and at the same time there have been no other responsibilities coming in as well. But I think it is basically part of the militant group which are basically working towards destabilizing the position as far as Pakistan government is concerned, security forces are concerned. At the same time, they are trying to show that they are very strongly present outside and in the vicinity of the capital Islamabad, that they can target easily whoever they want to, whenever they want to. All right, Hamza, we will be tracking all the latest with you on that story, but thank you very much for joining us with that update.